Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. From the platform of English Buffet.5, I am going to provide you another opportunity to learn. Yes, viewers, I will tell you today that there are many words in English language which can create certain doubts in our minds, and we become unsure whether to choose one, we can say option being its answer, or the other, right? So let's remove our you can say ambiguities and doubts today. You will definitely enjoy this lesson. So let's begin with it. The very first one is listening and hearing. Do you know the main difference between these two terms? It happens many times viewers कि हम सुनने के लिए listen का word भी इस्तेमाल करते हैं और hear का भी. So have you ever pondered over it कि इन दोनों का difference क्या है? If there are two words used for the purpose of hearing and listening separately, so इसके पीछे purpose भी तो होगा कोई. सुनने के लिए अगर दो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो डेफिनेटली देर इज़ सम पर्पस बिहाइंड. सो लेट्स क्लियर द डिफरेंस. लिसनिंग व्यूअर्स जो होती है, इट इज़ ऑल प्लान्ड, राइट? इट इज़ समथिंग वी हैव इंटेंशंस बिहाइंड, राइट? मतलब इसके पीछे एक रीज़न होता है दैट वी आर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड वी आर पेइंग अटेंशन टू समथिंग. For example, if the students are paying heed to the lesson of the teacher, we will say they are listening very carefully to the teacher. They are listening to the lecture. And on the other side, if we are hearing anything, it means it is unintentionally, and we are bound to listen whatever is coming to our mind. So that's the big difference. Listening is actually with attention, with effort, and voluntarily. Means you are prepared to listen. Your mind is ready to accept, right? जबकि hearing जो है वो naturally किसी sound का आपके कानों तक आना और आपका उसको सुनना, जिसमें कि आपकी attention हो या ना हो वो चीज़ matter नहीं करती. Definitely it will come and you have to listen, right? So hearing और listening का main difference यही है. Listening is with attention and hearing is without, right? Listening is with complete effort, and without effort is the hearing. The example is all students should listen to their teacher in the class, and the example for hearing is Nora heard someone shouting outside the house. I hope the difference is clear. Let's move ahead towards the second one. Yes, देखने के लिए आपने देखा होगा कि डिफरेंट वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सी है, लुक एंड वॉच, राइट? तो तीनों का मतलब तो यही है, देखना. लेकिन इनका चूंकि तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं तो डेफिनेटली देखने में भी कुछ एलिमेंट ऐसा होगा कि जो डिफरेंट है, राइट? आप देखिए, नंबर वन, सी. सी इज़ अ नेचुरल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स टू सी. If someone is not blind, he can see. This is what is meant by seeing. See the example. Can you see that sign? I see the man walking down the street. अब look क्या है? इसमें थोड़ा सा intentions आपका focus होता है. कैसे? For example, if the teacher says look at the board, you will definitely look. Okay? And another example is look, a storm is coming. I love this painting. I can look at it all the day, right? So you have to concentrate and focus if you are looking. And the third one is more intense. जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में आपसे कहा कि if you are planned, right, and you are fully concentrated, paying full attention in order to achieve something, so it means that you are watching, right? You watch something in action or moving. Are you watching the hockey game tonight? They watch the Olympics on TV. So seeing is the natural ability to see anything. Looking is a little bit focused, and watching is completely concentrated, right? That's the difference. Number three, waking up and getting up. Definitely the picture will make it clear to you. Waking up means कि नींद से जाग जाना, and physically if you are leaving your bed and moving for other works, it means you are getting up, right?
एक और यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस बता दूँ व्यूअर्स, जो वेकिंग अप है इट इज़ मोर फॉर्मल पार्ट ऑफ लैंग्वेज. If you are trying to write something as more formal, right, then you have to use wake up. And if you are just casually and informally saying something, that you can use get up for both purposes, right? So, number 4, difference between weeping and crying. Definitely, there are many more terms in English language which can explain the different types of weeping. Definitely, it means rona, but weeping can have less sounds, you can say. It means that emotionally you are very sad and you are not feeling good, and that can be weeping. But crying can be out of more intensity and producing sounds. You can say out of agony, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी में और बहुत ज़्यादा अपसेट होने की वजह से, if someone is little bit producing sounds and he's weeping, then we should use the word cry, right? Further, the picture is more explanatory. If you will have a look, definitely it will be clear to you, right? Number 5, द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वॉइस. ये दोनों वर्ड्स इंग्लिश में अक्सर इस्तेमाल होते हैं और एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, बट यू हैव टू नो द मेन डिफरेंस वाइल यूजिंग दैम, because this lesson is meant for growing yourself further. देखिए, once you learn something, you have to polish it and you have to grow better day by day. एक चीज़ जब आप सीख लेते हैं, उसके बाद आपको उससे बेहतर होते जाना है day by day. This is what I aim at today, right? So know the difference between sound and voice. Voice, viewers, आप simply कह सकते हैं it is man made, intentionally humans जो sound humanly produced होती है, we can say that that is the voice. और जो आवाज़ हमें दूसरे किसी सोर्स से हासिल होती है, we can say that is the sound, which is produced due to the vibrations of different things, you can say, in the air, and then it brings to our mind, right? Then it reaches to our ear and we listen. That is the sound. Sounds क्या क्या हो सकती हैं? It can be the sound of the animal, some natural phenomena like thundering and raining, and the other noises like that are produced by some machines and vehicles. Whereas on the other hand, you can see voice man made, जैसे मैंने पहले कहा, it can be this voice of crying, singing, murmuring, means muttering, whispering, screaming and shouting, etc., right? So whenever next time you will be using these words, try to keep in mind a little bit about the slight difference they are having. Number 6, कंप्लेन एंड कंप्लेंट. इसको हम मैनी टाइम्स व्यूअर्स कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वी हार्डली थिंक ओवर द डिफरेंस. वी स्पीक द वर्ड एंड वी यूज़ इट ऑन स्पॉट विदाउट बॉदरिंग कि इसका डिफरेंस क्या है. कंप्लेन जो है व्यूअर्स, ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, लाइक कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड एंड कंप्लेनिंग. जैसे कि नीचे आप सेंटेंस देख सकते हैं, ही ऑलवेज कंप्लेन्स और ही कंप्लेन्ड अबाउट द मैटर, फॉर एग्जाम्पल. अब दूसरी तरफ देखें, कंप्लेंट क्या है? इट्स अ नाउन बेसिकली, जिसको हम जिस तरह कहते हैं ना एडवाइज़, नसीहत करना, और एडवाइस नसीहत, उसी तरह से कंप्लेन वर्ब है और कंप्लेंट जो है नाउन है. इसकी कोई फॉर्म्स नहीं होती, एंड यू कैन यूज़ इट इन अ सेंटेंस इन दिस वे दैट आई मेड अ कंप्लेंट. मैंने एक जो है कंप्लेंट की, शिकायत की या दर्ज करवाई, फॉर एग्ज़ाम्पल. सो कंप्लेन मीन्स शिकायत करना एंड कंप्लेंट मीन्स शिकायत. दैट्स इट. नंबर 7, पुट वर्सेस कीप. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? पुटिंग इज़ अ लिटिल बिट इनफॉर्मल. साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ, डेफिनेटली व्यूअर्स आपको अपकमिंग लेसन्स में मैं डिटेल में बताऊँगी कि फॉर्मल इंग्लिश में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं एंड व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ द इनफॉर्मल वर्ड्स एंड लैंग्वेज, राइट? सो कीप जो है इट्स अ मोर फॉर्मल एंड पुट इज़ इनफॉर्मल.
keep is something in long term, कोई चीज़ पास रखना for the longer term, ज़्यादा अरसे के लिए, या on broader sense हम कह सकते हैं, जबकि putting है something very casual, थोड़े अरसे के लिए किसी चीज़ को रखना. Just take the example, keeping is holding or having something for a period of time, whereas putting is to lay or place no specific period of time. जैसे कि मैं कहूँ put out my glasses, okay, where have you put the glass, etc. right? जबकि keeping जो है, I will keep this ring forever. I hope you are getting the purpose. And keeping promise भी होता है एक word, okay. I will keep my promise always. I hope you are getting. So, keeping is for longer terms and for some, you can say, very sound purpose. Whereas putting is something casual. Normally, थोड़े अरसे के लिए या वैसे किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए भी आप putting का word use कर सकते हैं. Right? Next, number 8, and I hope this is the last one, trouble and problem. दोनों ही वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं वेन एवर वी ट्राई टू मैंशन सम कन्फ्यूजिंग स्टेट, राइट, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं मुश्किल. तो बेसिकली अगर दो वर्ड्स हैं तो इनका डिफरेंस भी तो होगा. तो वो डिफरेंस क्या है? अ प्रॉब्लम इज़ वन दैट हैज़ अ सल्यूशन ऑलवेज, राइट. जबकि ट्रबल कब हमें यूज़ करना चाहिए, इसका मीनिंग जान जाएं आप, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको कब कब यूज़ करना है. ट्रबल इज़ योर फीलिंग व्हेन बैड थिंग्स हैपन, राइट. प्रॉब्लम इज समथिंग which has some solution. Trouble is your feeling about that problem, right? So that's all. Keep going and keep growing. This lesson will help you understand different words in a, you can say, broader way. In, you can say, you are taking a one more step ahead. If you are learning one thing, you have to polish it further. This is what this lesson has done. So that's it. I hope you will enjoy the lesson and you will definitely practice over it. And please don't forget, if you are new to the channel, you have to subscribe it, and you have to share it also for further betterment, so that others may also get advantage out of it. Till the very next lesson, viewers, take care of yourself. Allah Hafiz.